Hello viewers, welcome to Econoplus YouTube channel. In this video, I will discuss singular definition of statistics. So previously, we have discussed origin and development of statistics, and we discussed the definition of statistics. So there are two types of definition. One is plural sense and second one is singular sense. So part 2 रे आमे देखि सारछु plural sense definition कोन थिला ଏବଂ এই ভিডিওରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସରେ ଡେଫିନେସନରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ କେତେକ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି according to Croxton and Cowden statistics may be defined as a science of collection presentation analysis and interpretation of numerical data ठीक अछि तो सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स रो मीनिंग होची स्टैटिस्टिकल मेथड सिंगुलर सेंस रे स्टैटिस्टिक्स रो मीनिंग होची स्टैटिस्टिकल मेथड एवं प्लुरल सेंस रे स्टैटिस्टिक्स रो मीनिंग होची स्टैटिस्टिकल डाटा परवर्ती डेफिनेशन होची अकॉर्डिंग टू नॉक्टर एंड वासरमैन statistics refers to the body of techniques or methodology which has been developed for the collection presentation and analysis of quantitative data and for the use of such data in decision making से मध्य समान कथाटी कहिले एवं आउ गोटे डेफिनेशन होची अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन कोन कहउछंती स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विथ द मेथड ऑफ कलेक्शन क्लासिफाइंग प्रेजेंटिंग कंपेयरिंग इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा collected to throw some light on sphere of enquiry so overallly এই সমস্ত ডেফিনেশন টি যদি আমি দেখিবা তো স্ট্যাটিস্টিক্স র মিনিং হউচি কলেকশন অর্গানাইজেশন প্রেজেন্টেশন এনালিसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा तो एथिरे स्टैटिस्टिक्स हउचि एक मेथड एथिरे पांचटी स्टेज अछि देखिबा कोन कोन स्टेज रहिछि स्टैटिस्टिक्स रो पांचटी स्टेज जदि हम पांचटी स्टेज को देखिबा हम जानि परिबा प्रथम स्टेज टी होची कोन ना कलेक्शन ऑफ डाटा सेकंड स्टेज होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एवं थर्ड स्टेज होची प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देन एनालिसिस ऑफ डाटा देन द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जदि यार आम निमोनिक्स करवा COPAI कोपाई तो यार माने होची कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा COPAI तो सिंगुलर सेंस रे स्टैटिस्टिक्स रो मीनिंग होची COPAI ऑफ डाटा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा So let's discuss about this stage one by one. प्रथमटी कौन रहिला हमरो steps or stages in statistical investigation. तो प्रथमटी रहउछि हमरो collection of data. तो हम जानिछु collection of data constitutes the first step in a statistical investigation. दा होछि प्रथम stage. So utmost care must be exercised in collecting data तो तथ्य संग्रह कला बेले हमकु बहुत ध्यान भाव में कलेक्शन करने पड़ो बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कारण तथ्य जदि भूल होइतिबो आमे भूल कंक्लूजन ड्रॉ करिबा ठीक अछि तो तथ्यटी भूल हला तले जो हमरो सिद्धांत पाइबा बा कंक्लूजन ड्रॉ करिबा दैट विल बी नॉट रिलायबल सो डाटा टी हमको दुईटी सोर्सेस रे मिली थाए गोटे होची प्राइमरी सोर्सेस रे जोटा कहछि प्राइमरी डाटा आ गोटे सेकेंडरी सोर्सेस हला तो प्रथमटी हे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस रे मिली थाए सो वी हैव टू टेक utmost care for collecting data because data form the foundation of statistical analysis यदि
फास्ट स्टेज रे गड़बड़ी हो गला तो सेकंड स्टेज रे पुणी डिफिकल्टी हम तो डिफिकल्ट हम तेणु प्रथम को आम फास्ट स्टेज रे ही प्रथम को आम डाटाटी भल भाव कलेक्शन करने पड़ो है सेकंड स्टेज जीवा सेकंड स्टेज रे कौन होची सेकंड स्टेज होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक सोर्सेस आर जनरली इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जदि हम प्राइमरी सोर्सेस डाटा जदि हम पब्लिक सोर्स बा सेकेंडरी सोर्सेस डाटा कलेक्शन करूछु तो सेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर रे थाए सेते हम किछ करिया पय पड़न थाए however a large mass of figures that are collected from a survey frequently needs organization तो ऑर्गेनाइजेशन रे ऑर्गेनाइज जदि हम प्राइमरी सोर्सेस डाटा कलेक्शन करवा तो डाटाटी कौन गोटे सीरियली न थाए तो आम ऑर्गेनाइज करने पड़ो तो ऑर्गेनाइजेशन तीन स्टेप अच्छी प्रथमटी हूँ कौन एडिटिंग ऑफ डाटा द्वितीयटी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एवं तृतीयटी हूँ टेबुलेशन ऑफ डाटा तो एडिटिंग द फर्स्ट स्टेप कौन इन ऑर्गेनाइजेशन ए ग्रुप ऑफ डाटा इज एडिटिंग द कलेक्टेड डाटा मस्ट बी एडिटेड वेरी केयरफुल्ली so that the omissions, inconsistencies, irrelevant answer and wrong computations in the returns from a survey may be corrected or adjusted है तो एथिरे आम चेकिंग करवा चेकिंग एंड ओमिटिंग इनकनसिस्टेंसी कौन रहा कौन भूलभाल रहा कौन इरिलेवेंस रहा ये सब चेकिंग करवा एडिटिंग रे है आफ्टर द डाटा हैज बीन एडिटेड जदि एडिटेड सरला तापर कौन हम तो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासीफाई देम तापर कौन ताको क्लासिफिकेशन करा पड़ो क्लासीफाइंग देम द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू अरेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक निर्दिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखी ताको हमें क्लासीफाई करवा तो यहाँ हूँ सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तो लास्ट कौन टेबुलेशन टेबुलेशन कौन करवा वी पुट द क्लासिफाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो टेबुल रे आमे ताकू सजेइबा द पर्पज ऑफ टेबुलेशन इज टू अरेंज द डाटा इन रो एंड कॉलम so that there is absolute clarity in the data presented तो आम रो वाइज कॉलम वाइज डाटा को अरेंज करदे जहाँफल आम एब्सोल्यूट क्लारिटी एक सठिक अनुध्यान करने सहज हेब तो ऑर्गेनाइजेशन डाटा रे तीन स्टेप अच्छी ECT एडिटिंग क्लासिफिकेशन देन टेबुलेशन नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट स्टेप कौन ना प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सो आफ्टर द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड माने दुईटी स्टेज गला परे दे आर रेडी फॉर प्रेजेंटेशन दुईटी स्टेज हला परे तृतीय स्टेज रे कोन हबो ना प्रेजेंटेशन करा जीवो डाटा प्रेजेंटेड इन एन ऑर्डरली मैनर डाटाटी जोटा ऑर्डरली मैनर प्रेजेंटेशन करा जाय परिबो सेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इजी हबो है तो डाटाटा आम किपरि प्रेजेंट करबा आम चार्ट माध्यम प्रेजेंट करबा चार्ट पिक्चर्स डायग्राम्स ग्राफ्स ये समस्त टूल्स रो हेल्प से आम डाटा को प्रेजेंट करबा सो वी प्रेजेंट डाटा विथ द हेल्प ऑफ चार्ट्स पिक्चर्स डायग्राम्स एंड ग्राफ्स फॉर एन इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा देन the next step is to analyze the data analyzing the data in a statistical investigation the process of analyzing data includes finding the various statistical constant from the collected mass data कौन कौन statistical constant आमे पाइबू analysis रू गोटे होउची कोन central tendencies measurement of dispersions and so on तो डाटा कलेक्शन कला परे एवं ऑर्गेनाइजेशन कला परे प्रेजेंटेशन कला परे हम कोन करिवो ना एनालिसिस करिवो एनालिसिस हम कोन करिवो तो एनालिसिस पर्पज कोन द पर्पज ऑफ एनालिसिस इज टू डिग आउट द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आमे हमर तथ्य माने तथ्य गुडी को बाहर करिवा जोडा हम एनालिसिस पई आवश्यक हमर डिसीजन मेकिंग पई आवश्यक तो एथरे हमें विभिन्न प्रकार कॉन्स्टेंट बाहर करता जोटा होची कोन सेंट्रल टेंडेंसी जेपरि मीन मीडियन मोड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन ये समस्त जिनिस बाहर कर दिया थाए तापर नेक्स्ट स्टेप होची कोन
interpretation of data. Interpretation of data. It involves interpreting the statistical constants computed in analyzing data for the formation of valid conclusion and inference. So এটা কোন লাস্ট স্টেজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেজ অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। यार माने हूँ ड्रॉइंग कनक्लूजन फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। जो डाटा आम कलेक्शन करूँ, जोटा आम एनालिसिस करूँ, से आम कौन एक सिद्धांत निर्धारण करिया बा ड्रॉइंग कनक्लूजन फ्रॉम द कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड डाटा। इट इज मोर डिफिकल्ट एंड स्किल रिक्वायरिंग स्टेज। এটা बहुत डिफिकल्ट होता है एवं याकू इन्वेस्टिगेटर स्किल आवश्यक पड़ी थाए। इट इज एट दिस स्टेज द स्टैटिस्टिक्स सीम टू बी वेरी मच वायबल एंड मिसयूज्ड। ठीक अच्छे। तापरे करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट विल लीड टू ए वैलिड कंक्लूजन ऑफ द डाटा ऑफ द स्टडी एंड हेंस कैन एड इन टेकिंग करेक्ट डिसीजंस। किंतु इम्प्रॉपर इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन मे लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। यदि आम ठीक भाव इंटरप्रिटेशन करिबा हमको सठिक कंक्लूजन बा सठिक सिद्धांत उपनीत हो पारिबा। किंतु जब आम इनकरेक्ट बा भूल भाव रे ताकू इंटरप्रिट करिबा ताले हमको रॉन्ग कंक्लूजन आसीबो। तापर आम देखिबा सिंगुलर डेफिनेशन एवं प्लुराल डेफिनेशन मध्य डिफरेंस कौन। गोटे हूँ कौन स्टैटिस्टिक्स एज डाटा। स्टैटिस्टिक्स को डाटा हिसाब से आम कौन कौ डेफिनेशन कही था ना प्लुराल डेफिनेशन रे। किंतु स्टैटिस्टिक्स को गोटे मेथड हिसाब से आम कौ डेफिनेशन कही था ना सिंगुलर डेफिनेशन रे। सो इट इज प्लुराल सेंस। In the plural sense, statistics is used as data, but in the singular sense, statistics is as method. Then it refers to a series of data. So in the plural sense, statistics refers to a series of data. But in the singular sense, it refers to any statistical method. Then it may be of primary or secondary nature in the plural sense, and it is of scientific nature in singular sense. It is in the form of raw materials in the plural sense, and it is in the form of tools applied for processing the materials in the singular sense. तो आम बुझीपारे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स दुई भाग रे, गोटे हूँ सिंगुलर सेंस रे, गोटे हूँ प्लुराल सेंस रे। तो ये वीडियो केवल एतिकी, और नेक्स्ट वीडियो रे आमे अन्य टॉपिक को देखिबा। थैंक यू।